नेक्स्ट हमसे बोला है इसी डेटा के साथ हमें मार्जिनल कॉस्ट शीट बनानी है. मार्जिनल बेसिस पे नाउ वी हैव टू फाइंड द प्रॉफिट. एक्चुअल प्रॉफिट निकालना है बेस्ड ऑन मार्जिनल. सो वी विल मेक द इनकम स्टेटमेंट ऑन मार्जिनल कॉस्टिंग. सेल्स विल बी द सेम जो हमने इधर कैलकुलेट किया 13,50,000 माइनस वेरिएबल कॉस्ट. मार्जिनल में वी कंसिडर द कॉस्ट ओनली फॉर द क्वांटिटी वी हैव सोल्ड. हम उसका ही कॉस्ट कंसिडर करते हैं. वी डू नॉट टेक टोटल क्वांटिटी जो प्रोड्यूस की उसका कॉस्ट और फिर ओपनिंग क्लोजिंग का एडजस्टमेंट. हम ये देखते हैं हमने 2,25,000 यूनिट्स बेचे, उनका कॉस्ट इधर है. उन 2,25,000 से का जब सेल्स इधर है तो उससे रिलेटेड कॉस्ट इधर आएगा. करेक्ट. हम ऐसा ही करते हैं मार्जिनल में. अगर आप टोटालिटी पे भी करोगे तो भी देयर विल बी नथिंग रॉन्ग. इट विल जस्ट इंक्रीज योर स्टेप्स. आंसर आपका सेम ही आएगा. 240 पे पहले कॉस्ट डिडक्ट कर लो, उसके बाद में फिर आप उसमें ओपनिंग क्लोजिंग का एडजस्टमेंट करो. आंसर्स वुड बी सेम, सिर्फ आपके स्टेप्स इंक्रीज हो जाएंगे. सो इंस्टेड ऑफ दैट हम मार्जिनल में केवल जो क्वांटिटी हमने सेल आउट करी है उसी से ही रिलेटेड कॉस्ट भी कंसिडर करते हैं. सो वी विल नाउ कंसिडर द वेरिएबल कॉस्ट फॉर द क्वांटिटी वी हैव सोल्ड, दैट इज 2,25,000 यूनिट्स. सो वेरिएबल कॉस्ट में हमारे पास है फैक्ट्री ओवरहेड्स. नाउ we have sold 15,000 units from the opening stock. Out of 225, 15,000 units were produced in the last year. Rest 2,10,000 units have been produced in the current year and sold in the current year. तो 15,000 जो ओपनिंग स्टॉक के थे उस पे कॉस्ट स्ट्रक्चर भी लास्ट ईयर का एप्लीकेबल होगा. उनसे रिलेटेड फैक्ट्री कॉस्ट विल बी 33 रुपीज ओनली. वेराज जो बाकी का करंट प्रोडक्शन के जो यूनिट्स हमने बेचे 2,10,000 उन पे द कॉस्ट एप्लीकेबल शैल बी 33.5. यही होगा बेस्ड ऑन फीफो. $4,95,000 $70,35,000. करंट प्रोडक्शन में से हमने कितने यूनिट सेल आउट किए? 225 टोटल बेचे, उसमें से 15 तो लास्ट ईयर के बेचे, तो बाकी 210 करंट प्रोडक्शन में से सेल आउट किए. ये हो गया हमारा फैक्ट्री ओवरहेड्स. उसके बाद सेलिंग ओवरहेड. सेलिंग ओवरहेड तो पूरा करंट ईयर में ही हमने इनकर किया है. जो ओपनिंग स्टॉक था उस पर भी हमने करंट ईयर में ही सेलिंग ओवरहेड इनकर किया. सेलिंग ओवरहेड इज 9 रुपीज पर यूनिट. So we'll have 2,25,000 into 9. 20,25,000. ये हो गए हमारे वेरिएबल कॉस्ट. दिस विल गिव अस कंट्रीब्यूशन. $39,45,000. From this contribution now we will deduct the fixed cost. Factory overhead 21,60,000 and selling overhead 7,56,000. So this will give us profit 10,29,000.
This is the net profit based on marginal costing. Any doubts? लिख लीजिए and then read the next question. Question number 31. Fairbuilt Furniture Limited manufactured 3 products, tables, chairs and cabinets. The company is in the process of finalizing the plans for the coming year. Hence, the executive thought it would be prudent to have a look at the product-wise performance during the current year. The following information is furnished. So, current year का details आपको दिया हुआ है based on which they are planning for the future year. करंट ईयर के तीनों प्रोडक्ट टेबल चेयर कैबिनेट्स के वी हैव द यूनिट सेलिंग प्राइसेस, वी हैव द डायरेक्ट मटेरियल, लेबर, फैक्ट्री ओवरहेड्स में वेरिएबल एंड फिक्स्ड, तो टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है हमारे पास. देन वी हैव वेरिएबल एंड फिक्स्ड सेलिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, एडमिन ओवरहेड्स. सो दिस गिव्स अस द टोटल यूनिट कॉस्ट. देन subtracting the unit cost from the unit selling price we get unit profit और loss. तो यहाँ पे प्रॉफिट या लॉस फाइंड करने के लिए दे हैव ऑल्सो डिडक्टेड द फिक्स्ड कॉस्ट. फिक्स कॉस्ट भी लेस करके उन्होंने प्रॉफिट या लॉस निकाले हैं. वेराज फिक्स कॉस्ट आर नॉट प्रोडक्ट स्पेसिफिक. ऐसा नहीं है कि कैबिनेट आप बना रहे हो तो ही इनकर हो रहा है या टेबल बना रहे हो तो ही इनकर किया जा रहा है. फिक्स कॉस्ट आर जनरल कॉस्ट. आप कोई भी प्रोडक्ट बनाओगे, इफ यू आर ऑपरेटिंग यू हैव टू इनकर दैट कॉस्ट. Then sales volumes are given and the total profit or loss is given. तो एक चीज तो पक्का है कि ये जो प्रॉफिट या लॉस निकाला हुआ है that is wrong because they have also deducted fixed cost from this, whereas actually fixed cost products में हम deduct नहीं कर सकते. Overall totality में हम deduct कर सकते हैं to find the company's profit or loss, but product wise we do never deduct the fixed cost. For the coming period, the selling price and the cost of the 3 products are expected to remain unchanged. Selling price as well as cost, all of them shall be the same. There will be an increase in the sales of tables by 1000 and the increase in the sale of cabinet is expected to be 8000 units. So there is an increase in demand. Selling price per unit, cost per unit, that structure will be the same, but there is an increase in the quantity demanded. The sales of chairs will remain to be unchanged. Sufficient additional capacity exists to enable the increased demands to be met without incurring additional fixed cost. So even if we produce the additional quantity demanded, there is no additional fixed cost which we will have to incur. Some among the executives contend that it will be unwise to go for additional production and sale of cabinets since it is already making losses at 80 per unit. तो आप देख सकते हो ऊपर कैबिनेट्स का देयर इज अ लॉस नॉट 80, इट इज 0.8 पर यूनिट. 0.8 का लॉस है हमें हर एक यूनिट पे इन कैबिनेट्स एज पर दी अबव गिवन वर्किंग. तो हमारे कुछ एग्जीक्यूटिव्स ये बोल रहे हैं कि कैबिनेट तो ऑलरेडी लॉस मेकिंग है, सो व्हाई टू इंक्रीज इट्स क्वांटिटी सोल्ड. 8000 से उसकी डिमांड बढ़ रही है बट दे आर सेइंग हम इंक्रीज करें क्यों, उल्टा ये तो लॉस मेकिंग है, अगर तो इसे बंद कर देना चाहिए. The suggestion is that cabinets should be eliminated altogether. Do you agree? Substantiate with necessary analysis and determine the product-wise and overall profit for the coming year. क्या आप executive की बात से agree करते हो? Should cabinet be eliminated altogether? So you have to give all the workings.
and additionally you have to find out product wise profit as well as overall profit in the coming year. मतलब हमें पूरा कॉस्ट शीट बनाना है ओवरऑल और टोटल प्रॉफिट निकालने के लिए, एंड दैट इज फॉर द कमिंग ईयर. मतलब हम जो क्वांटिटीज लेंगे वो नेक्स्ट ईयर वाली क्वांटिटीज होंगी, द इंक्रीज्ड वंस. So to decide whether we should produce cabinet or not, we will have to find contribution per unit. अगर हमें कैबिनेट से कोई भी कंट्रीब्यूशन मिलता है हम बोलेंगे उसे प्रोड्यूस करना चाहिए. अगर नेगेटिव कंट्रीब्यूशन होता है ओनली देन वी विल सजेस्ट कि ये प्रोडक्ट हमें बंद कर देना चाहिए. ओके और हमें तीनों प्रोडक्ट्स की ओवरऑल इंडिविजुअल भी हमें कंट्रीब्यूशंस निकालने ही है. सो फर्स्ट लेट्स कैलकुलेट कंट्रीब्यूशंस पर यूनिट फॉर ऑल द 3 प्रोडक्ट. तो हमारे दोनों पर्पसेस सॉल्व हो जाएंगे. वी हैव टेबल्स, चेयर्स एंड कैबिनेट्स. Selling price per unit is given as 80, 60 and 36. इसके बाद हमें cost structure दिया है. So first we will consider only the variable cost. Material 28, 24, 16. किसी भी cost में there is no change. All the cost will be the same in the next year also. Labor is 20, 12, 12. Variable factory overheads. They shall be 8, 6 and 4. Then we have variable selling overheads 4, 2 and 2. So this gives us contribution per unit. निकालिए. $20, 16 and 2. These will be the contributions per unit. तो इसको हम देख के बोल सकते हैं तीनों ही प्रोडक्ट कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं. इसका मतलब कोई भी प्रोडक्ट हमें बंद नहीं करना चाहिए. कैबिनेट का भी प्रोडक्शन हमें करते रहना चाहिए. एडिशनल जो भी डिमांड है वी शुड फुलफिल दैट बिकॉज इट इज गिविंग सम पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन. हर एक एडिशनल कैबिनेट जो हम बनाएंगे 2 रुपए हमें एक्स्ट्रा ही मिलेंगे. तो हमें इसका भी प्रोडक्शन करते रहना चाहिए. आया समझ में? तो हमारे एक पार्ट का तो आंसर हमें मिल गया. कैबिनेट जो एग्जीक्यूटिव सजेस्ट कर रहे हैं कैबिनेट के लिए टू एलिमिनेट इट, दैट इज नॉट करेक्ट. सेकेंड पार्ट में हमें प्रॉफिटेबिलिटी वर्कआउट करनी है. तो हमने कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकाल लिए. व्हेन वी मल्टीप्लाई दिस बाय द क्वांटिटी हमें टोटल कंट्रीब्यूशन मिल जाएगा. क्वांटिटीज फॉर द नेक्स्ट ईयर नॉट फॉर द करंट ईयर. नेक्स्ट ईयर में बोला है टेबल और कैबिनेट्स की डिमांड में इंक्रीज है. टेबल्स की डिमांड इंक्रीज हो रही है बाय 1000 यूनिट्स. ऑलरेडी द सेल्स वॉल्यूम वाज 10,000 फॉर टेबल्स. सो फॉर द नेक्स्ट ईयर इट विल बी 11,000. चेयर्स में देयर इज नो चेंज, सो वी विल हैव 15,000 ओनली. कैबिनेट्स में वी हैव एन इंक्रीज बाय 8,000. ऑलरेडी इट वाज 15 प्लस 8, सो वी विल हैव 23,000 एज द डिमांड ऑफ कैबिनेट्स. दिस विल गिव अस द टोटल कंट्रीब्यूशन. $2,40,000 and 46,000. ये तो हो गए प्रोडक्ट वाइज प्रॉफिटेबिलिटी. नाउ टू कैलकुलेट ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी वी विल सम दिस अप टू फाइंड द टोटल कंट्रीब्यूशन ऑफ द फैक्ट्री एज अ होल. $506,000 minus fixed cost. From this total contribution we will deduct the fixed cost. Fixed cost हमारे पास दो हैं, एक तो फैक्ट्री ओवरहेड्स, दूसरा सेलिंग ओवरहेड्स. So we'll have to calculate how much fixed cost shall be there. हमें per units दिए हैं, हमें टोटालिटी में निकालने पड़ेंगे.
फैक्ट्री ओवरहेड्स आर गिवन एज 86 एंड 1.28 पर यूनिट. तो टोटल कितने हो जाएंगे? दिस विल बी 8 रुपीज इज फॉर द टेबल्स. 8 मल्टीप्लाइड बाय टेबल के टोटल हम लास्ट ईयर बनाते थे 10,000 यूनिट्स. मतलब टेबल पे टोटल हम चार्ज कर रहे थे 80,000 रुपीज. करंट ईयर में भी उतने ही फिक्स कॉस्ट हैं जितने लास्ट ईयर में थे. देयर इज नो चेंज इन एनी फिक्स कॉस्ट. लास्ट ईयर में इतने होंगे टेबल के ऊपर फिक्स कॉस्ट. चेयर्स के लिए बोला गया है पर यूनिट वाज 6 एंड द क्वांटिटी प्रोड्यूस वाज 15,000. एंड कैबिनेट्स में पर यूनिट कॉस्ट वर 1.28 एंड क्वांटिटी प्रोड्यूस वाज 15,000. So this should be the total factory overheads, factory fixed overheads. $80,000 plus 90,000 plus this one. 1,89,200. This is the fixed factory overheads. Then coming to the fixed selling overhead. Again we'll have to find out like this. It's given as 4 rupees per unit for tables. Table के ऊपर total हम 40,000 incur कर रहे होंगे. It's given 6 rupees per unit for chairs. 6 into 15,000 and 1.52 for cabinets. $1,52,800. So this will give us the profit. Total contribution minus fixed cost. 1,64,000 shall be the profit. ये हो गया हमारा प्रोडक्ट वाइज और ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी. और इसके बाद आपको स्टेटमेंट देना है दैट सिंस cabinets are giving additional contribution of 2 rupees per unit, it is advisable to increase its production by 8,000 units. So as to receive an additional contribution of 16,000 rupees without incurrence of any additional fixed cost. Any doubts? लिख लीजिए and do the next one. 32. Read the question.